अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, चांसेस आर यू हैव हैड दिस कॉन्वर्सेशन विद योरसेल्फ एट सम पॉइंट। PS5 लेना चाहिए या पीसी बनाओ, या भाई फोन पे ही खेलना ठीक है। एंड एवरी टाइम you try to do the math, it gets complicated quickly because nobody gives you the full honest number, just the parts that sound good. तो आज हम वो पूरा नंबर निकालते हैं PS5, PC और मोबाइल के लिए। रियल कॉस्ट्स, नो बायस, नो एजेंडा, जस्ट अ मैथ। हेलो गेमर्स, मैं हूं पैराडॉक्स और आप देख रहे हैं गेम न्यूज़, आपका रूटीन पल्स चेक ऑन द गेमिंग वर्ल्ड। ये वीडियो हमारे यूजुअल न्यूज़ फॉर्मेट से थोड़ा अलग है। इट्स मोर ऑफ एन ऑनेस्ट ब्रेकडाउन दैट आई थिंक अ लॉट ऑफ इंडियन गेमर्स जेन्युइनली नीड राइट नाउ, स्पेशली विद एवरीथिंग हैपनिंग विद प्राइजेस दिस ईयर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो सब्सक्राइब करो एंड हमारे नॉन स्टॉप फैमिली का हिस्सा बनो। नाउ लेट्स गेट इनटू द नंबर्स। शुरू करते हैं सबसे एस्पिरेशनल ऑप्शन के साथ, द PS5। एंड आई वांट टू बी क्लियर अप फ्रंट, ये जेन्युइनली एक इनसेन कंसोल है। द गेम्स आर ग्रेट, ड्यूअल सेंस जैसा फीचर रिच कंट्रोलर एंड द एक्सक्लूसिव्स आर सम ऑफ द बेस्ट मेड गेम्स इन द वर्ल्ड। दिस इज नॉट अ हेट पीस, बट हियर्स व्हाट इट एक्चुअली कॉस्ट्स इन इंडिया। PS5 Disc Edition ₹55,000 confirmed on Flipkart and Amazon right now. PS5 Pro जिसका प्रीमियम वर्जन है, उसका कॉस्ट यूजुअली 90,000 से भी ज़्यादा होता है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स आउट ऑफ स्टॉक। इसलिए वी आर गोइंग विद द स्टैंडर्ड डिस्क एडिशन फॉर दिस कैलकुलेशन। अब क्या आप ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम्स खेल सकते हैं विदाउट अ PS Plus सब्सक्रिप्शन? ना जी ना। आपके फ्रेंड्स के साथ खेलने के लिए PS Plus एसेंशियल मैंडेटरी है, जिसका कॉस्ट ऑलमोस्ट ₹3,000 पर ईयर होता है। कैलकुलेशन के नेक्स्ट स्टेप के लिए अज्यूम करते हैं कि आप एक कैजुअल गेमर है एंड साल के 3 गेम्स खेलते हैं। अ न्यू AAA गेम एट लॉन्च जैसे Spider-Man 2 costed around ₹5,000. God of War Ragnarok was ₹5,200 and कुछ recent leaks के basis पर GTA 6 at launch will be ₹7,000. That is a conservative estimate of roughly ₹17,200. तो आपका फर्स्ट ईयर का टोटल विद अ PS5 परचेज, अ PS Plus essential for 1 year and 3 games at launch would be approximately ₹75,000, and that's the real number. From year 2 onwards, you're looking at ₹3,000 per year for your PS Plus subscription in addition to whatever games you buy. Games do get cheaper with time. PS Store sales can bring a ₹5,000 game down to ₹2,000. So if you're patient, the ongoing cost becomes much more manageable. और यहाँ पे पैसे उड़ाने की तो कोई लिमिट नहीं है। There's also a PS Plus Extra at ₹6,700 per year, which gives you access to hundreds of games in a catalog. अगर आप hardcore gamer है, then it's genuinely a good value and another number to factor in. The PS5 is a premium product at a premium price. India में ₹75,000 is a significant amount of money for most households. That's the honest context. अब बात करते हैं पीसी गेमिंग के बारे में। ये प्राइस करने के लिए थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है बिकॉज अनलाइक अ कंसोल देयर इज नो फिक्स नंबर, बट लेट्स बिल्ड अ रियलिस्टिक पिक्चर। एक सॉलिड 1080p mid-range gaming PC in 2026 with a RTX 4060 is going to cost you somewhere between ₹80,000 and ₹1,25,000 for the full build. The RTX 4060 GPU alone is about ₹28,000 to ₹30,000. Add a CPU, motherboard, RAM, storage, cabinet, power supply, you're at ₹80,000 minimum for something that's genuinely capable. Now, here's where PC gaming gets interesting for the Indian gamers. Specifically, 2 things. First, online gaming is free on PC. इसके लिए कोई एडिशनल सब्सक्रिप्शन नहीं लगता। Valorant, BGMI PC and CS2 जैसे गेम्स खेलने के लिए you just need the internet connection. That's ₹3,000 per year you're not spending. Second, Steam pricing in India is significantly lower than the console pricing. वो सेम गेम जिसका कॉस्ट ₹5,000 था ऑन PlayStation Store, इंडियन Steam अकाउंट पर ₹1,500 to ₹2,500 में मिल जाता है। एंड Steam पर इतने एग्रेसिव सेल होते हैं कि आप 2 की जगह 4 गेम्स ले लेंगे बिना कोई रिग्रेट के। 2-3 साल पुराने AAA गेम्स रेगुलरली ड्रॉप अंडर ₹500। सो PC मैथ कुछ ऐसा दिखता है। ₹80,000 to ₹1 lakh upfront for the build. Year 1 में no additional subscription. 3 games at Indian Steam prices roughly ₹5,000 to ₹7,000. If you already have a monitor, keyboard, mouse, great. If not, add ₹8,000 to ₹15,000 for a decent 1080p setup. ये सब गिनकर आपका फर्स्ट ईयर का टोटल फॉर PC रफली 90,000 टू ₹1,15,000 होता है। अब आप सोच रहे होंगे ये तो PS5 के ईयर 1 से ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बट पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। एंड हियर्स द थिंग दैट चेंजेस द मैथ ओवर टाइम। ईयर 2, ईयर 3 एंड ईयर 4 योर PC doesn't stop working. You don't need a subscription to play online. Your games library accumulates at lower prices. And unlike a console, आप individual parts upgrade कर सकते हैं rather than buying an entirely new machine.
PC gaming rewards patience. It's a higher upfront investment, but over 4 or 5 years it often ends up being the better value proposition, especially for gamers who play a lot and are comfortable with the technical side of building a PC. आखिरी सेक्शन है मोबाइल गेमिंग एंड बिफोर यू स्किप दिस सेक्शन गिव इट 30 सेकंड्स बिकॉज द नंबर्स आर जेन्युइनली सरप्राइजिंग. जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनके पास ऑलरेडी एक स्मार्टफोन होगा विच शुड बी केपेबल ऑफ रनिंग BGMI, फ्री फायर और वैलोरेंट मोबाइल. सो द डिवाइस कॉस्ट इज इफेक्टिवली जीरो. आपको गेमिंग के लिए कोई नया फ़ोन लेने की ज़रूरत नहीं है. अब इसके लिए जो इंटरनेट चाहिए वो जियो या एयरटेल फाइबर के बेसिक प्लान से भी मिल जाता है विच वुड बी अराउंड ₹599 to ₹999 पर मंथ. ये कॉस्ट ऑलरेडी मोस्ट इंडियन हाउस होल्ड्स पे करती है. एंड द गेम्स, BGMI is free, Free Fire is free, Valorant Mobile is free. You can play all of them competitively without spending a single rupee. अब आपको पैसे खर्च करने ही है तो आप BGMI में स्किन्स, बैटल पासेस एंड कॉस्मेटिक्स खरीद सकते हो. एंड ये कोई गेम प्ले अफेक्ट नहीं करता, सब सिर्फ आपके शौक पर है. Best part is, mobile gaming in India is not considered a lesser experience. It's just a different one. The esports scene is massive, the player base is enormous, and the barrier to entry is genuinely zero. Year one cost of mobile gaming if you already own a phone is anywhere between ₹0 to whatever you choose to spend on the cosmetics. So here is the honest answer, and I'm not going to pretend there's one right choice because there isn't. अगर आप exclusive, most polished single player games experience करना चाहते हैं and you have around ₹75,000 to spend in year one, PS5 is a genuinely great investment, especially if you are a casual to moderate gamer who plays 2 to 3 hours a day. Value per hour एकदम solid है. If you game heavily 4 or more hours a day and you are willing to put in the effort to build and manage a PC gaming wins over 3 to 5 years. Lower game costs, no subscriptions and more flexibility. बस थोड़ा patience रखना होगा and a higher upfront commitment. And if you're a student, someone on a tight budget or someone who games primarily on the go, mobile gaming in India is genuinely competitive. Games free है, esports एक experience and you're not missing out on as much as the internet wants you to believe. The question isn't which platform is best, it's which platform makes sense for your life right now. और इसके लिए कोई wrong answer नहीं है. Comment में बताओ PS5, PC या mobile और क्यों. मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ एंड उनका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश. नाउ दिस इज द फुल ऑनेस्ट कैलकुलेशन. PS5, PC एंड मोबाइल गेमिंग इन इंडिया इन 2026. रियल नंबर्स एंड नो फ्लफ. अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी शेयर करो. सीरियसली, दिस वन इज द काइंड ऑफ वीडियो दैट एक्चुअली हेल्प्स पीपल मेक रियल डिसीजंस एंड शेयरिंग जेन्युइनली हेल्प्स द चैनल ग्रो. सब्सक्राइब भी करो अगर अभी तक नहीं किया. मैं हूँ पैराडॉक्स. खेलते रहिए, गेम ऑन.